अब शांति। ये 27 दिसंबर 2021 की मुरली के ऊपर कुछ विचार हैं। आज बाबा का टॉपिक है कि स्वयं रचयिता रचना का आदि मध्य अंत का ज्ञान दे सकता है। आज का मुरली के पहले का गीत है ओम नमो शिवाय। तो बाबा समझा रहा है कि देखो भक्ति में शिव कौन है, वो सारा ही ज्ञान बुद्धि से निकल गया है। आजकल तो शिव और शंकर को एक समझते हैं। हमेशा ऐसे नहीं था, परंतु कलयुग में ऐसे समझ बन गई है। तो जब हम नवे भाई बहनों को ज्ञान देते हैं तो पहले पहले ऐसे नहीं बोलते हैं कि शंकर कोई चीज़ है ही नहीं। ऐसे बोलते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन में है और फिर निराकार शिव वो अलग है। तो पहले उनको ऐसे समझाना होता है, फिर धीरे जितने वो मुरली में आते रहते हैं तो समझते जाएंगे कि वास्तव में ब्रह्मा विष्णु शंकर कोई ऊपर तीन खड़े नहीं हैं। ये तो एक सिंबल है, परंतु स्टार्टिंग में ऐसे नहीं समझाना है। तो बाबा समझाते हैं कि निराकार शिव वो ज्ञान का सागर है, सृष्टि का बीज रूप है। तो भक्ति में तो हम समझते हैं कि रचयिता माना बनाने वाला, परंतु बाबा समझाता है कि रचयिता माना जिसमें रचना का ज्ञान है। ठीक है ना, क्योंकि ये रचना बना बनाया ड्रामा है। शिव बाबा उस ड्रामा को रचता नहीं है, वो ड्रामा अनादि है, परंतु शिव बाबा में इस ड्रामा का आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तो बाबा समझाता है कि जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनकी बुद्धि में ये नाटक हमेशा रहता है, क्योंकि हम रोज़ मुरली सुनते हैं तो हमारे सोच हमारे दृष्टिकोण सब बदल गया है। तो जो कुछ अपने जीवन में होता है, दुनिया में होता है, हम इस सृष्टि के नाटक का ज्ञान की जैसे चश्मे द्वारा उन सभी बातों को देखते हैं। यदि कोई बात होता है, समझो कोई शरीर छोड़ता है, तो तुरंत आपकी बुद्धि में आएगा कि हर आत्मा का अपना पार्ट होता है, वो दूसरा पार्ट बजाने के लिए गया है। यदि कोई न कोई हिसाब किताब आता है तो आप समझते हो कि यह तो क़यामत का समय है, अभी कर्मातीत बन करके घर जाना है। यदि आपके जीवन में मुसीबत आती है तो आपकी बुद्धि में सीढ़ी का चित्र आता है और आप समझते हो कि सदा ऐसी घटना नहीं थी। आप जब सतप्रधान थे तब आप विश्व के मालिक थे, सर्व प्राप्ति संपन्न थे। अभी आपका तमो प्रधान अवस्था है, इसलिए ये सब मुसीबत आपके जीवन में आती है। तो हर बात जो भी होता है, न्यूज़ पर जो कुछ आप देखते हो, आप हमेशा बाबा के ज्ञान की नज़र से सब बात देखते हैं। तो ये आपके लिए नॉर्मल है। तो बाबा सारा जो कल्प है इसका ज्ञान आज दे रहा है, और बाबा देता है क्योंकि बाबा कहते हैं यही शिव बाबा का ज्ञान है। शिव बाबा ही ज्ञान दे सकता है। वास्तव में मनुष्य आत्मा को आध्यात्मिकता पर समझाना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं है।
तो बाबा ज्ञान देता है कि देखो, आप सब आत्माएं सतयुग और त्रेता युग में देवी देवता धर्म में थे। तो देवी देवता स्वरूप हैं, आत्म अभिमानी हैं, पवित्रता की धारणा है। तो जिस समय आपकी बुद्धि ऐसी सतो प्रधान सालिम थी, उस समय आप भक्ति करते ही नहीं। यदि भक्ति कोई अच्छी चीज होती तो आप सतयुग में करते ना, परंतु आप करते ही नहीं हो, आपकी बुद्धि उस समय अच्छी है। फिर द्वापर युग की शुरुआत में आप एक ही शिव की अव्यभिचारी भक्ति करते हो। तो रजो प्रधान अवस्था में भी आपकी बुद्धि तो चलती है। यदि भक्ति करनी है तो एक शिव की करो ना, निराकार की करो। परंतु आप देखते हो कि ये तो ड्रामा में पार्ट है कि हमें व्यभिचारी बनना ही पड़ता है, अनेक भक्ति का पार्ट है ड्रामा में। तो बाबा समझाया करता है कि ये ड्रामा ऐसा बना है कि आधा कदम देवी देवता धर्म होता है, उस समय और कोई धर्म नहीं है। ये ड्रामा का नियम है। जिस समय इस कल्प वृक्ष के तना है, उस समय शाखाएं नहीं है। और द्वापर और कलयुग में अनेक शाखाएं हैं तो तना नहीं है। ये ड्रामा का नियम है। तो जिस समय भक्ति है, उस समय देवी देवता धर्म नहीं है। जिस समय देवी देवता धर्म है, उस समय भक्ति नहीं है। तो बाबा समझाया करता है, ये वड का झाड़ के जैसे ही है कि कैसे वो हरा भरा खड़ा होता है, परंतु तना नहीं है। तो शाखाएं सब संभालती हैं। तो हमारी जो दुनिया जो बनी है, वो अनेक धर्म के सत्ताओं के आधार पर बनी है। उनके हाथों में विश्व का पावर है। आप सब देवी देवताओं के हाथ में नहीं है। आपका आधा कल्प से पावर चला गया है। अभी बाबा आप में भर रहा है। तो ये ड्रामा में है कि अनेक धर्म की भिन्न भिन्न राजधानी होना ही है। तो बाबा समझाया करता है कि सन्यासी यों के भाषणों में ऐसे आपको ये शब्द सुनने को मिलेगा, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। परंतु उनका अर्थ होता है कि एक ही जीवन में ये 3 स्टेजेस होनी चाहिए। जैसे आश्रम दिखाते हैं, 4 आश्रम, तो ऐसे ही बोलते हैं कि बचपन में ज्ञान अर्थात विद्या, फिर गृहस्थी जीवन में भक्ति, गृहस्थी भक्ति करते हैं, फिर रिटायरमेंट के बाद वैराग्य के रिटायरमेंट पर संन्यास, कहीं तो संन्यास ही लेते हैं ना। तो ऐसे सिस्टम्स जैसे सुनाते हैं, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के एक ही जीवन में ये 3 स्टेजेस। बाबा ये बात बेहद में लेके जाता है। सतयुग और त्रेता युग में आप ज्ञान स्वरूप हो। ज्ञान उस समय आप सीखते नहीं हो, लेकिन आप स्वरूप हो देवी देवता। फिर आधा कल्प द्वापर कलयुग में आपका ड्रामा में पार्ट है भक्ति करने का। तो आज बाबा कह रहा है कि देखो, आप
कितने दुख उठाते हो बच्चे, मीठे बच्चे, परंतु ये ड्रामा में पार्ट है। आपको दुखी होना ही है, आपको भारे होना ही है, तमो प्रधान बनना ही है। तो आधा कल्प भक्ति, और फिर अब भी संगम युग पर शिव बाबा हम सबको ज्ञान दिला करके भक्ति से वैराग्य दिलवाता है, भक्ति और रावण से। एक बारी किस भाई बहनों ने ब्रह्मा बाबा को एक खिलौना दिया था। एक तरफ राम, दूसरी तरफ रावण और बीच में सीता। तो एक तरफ खींचे, दूसरा तरफ खींचे। तो बाबा कह रहा है कि भारतवासियों न जानते हैं पावन बनाने वाला कौन, न जानता है पतित बनाने वाला कौन। न पतित पावन को जानते हैं, न पतित करने वाले जानते हैं, परंतु दोनों का अवतरण भारत में ही होता। शिव बाबा पतित पावन का अवतरण भारत में, और रावण हम देवता वाम मार्ग में जाते हैं न पतित बनते हैं न, कहाँ? भारत में। तो विकार भी भारत से शुरू होता है। अभी शिव बाबा सबको पावन भी भारत से करते हैं। तो भारत जैसे सारी विश्व के देशों का फाउंडेशन है, जड़ है। तो जहाँ जो भारत में होता है वो विश्व में फैलता है। तो बाबा समझाया करता है कि अभी फिर से बाबा देवी देवता धर्म स्थापन कर रहा है। तो आप सब ये सब जानते ही हैं, आपकी बुद्धि में ये ज्ञान है। तो वैराग्य, दादी जानकी को इंग्लिश शब्द अच्छा लगता था, डिसइंटरेस्ट, क्योंकि जब वैराग्य बोलते हैं तो लोग डर जाते हैं कि ये कोई सन्यासी की बात, फकीर की बात कर रही है। परंतु डिसइंटरेस्ट माना इंटरेस्ट नहीं है। तो आज का वरदान जो है वो है सिंप्लिसिटी के ऊपर, सादगी के ऊपर। तो दादी जानकी समझाया करती थी कि वैराग्य का मतलब ही है कि सिंपल रहो। तो हमें दो प्रकार की सिंप्लिसिटी धारण करनी होती है। एक होती है प्रैक्टिकल सिंप्लिसिटी, क्योंकि वस्तु की बोझ है, बहुत कुछ फैलाएंगे, अपना बिजनेस फैलाएंगे, सब कुछ फैलाएंगे, अथवा बहुत फैमिली में फैलाएंगे, तो हम सब अनुभवी हैं कि इसका बोझ मन महसूस होता है, और मन भी अनेक तरफ, बुद्धि अनेक तरफ जाती रहती है। और दूसरा है अंदर की सिंप्लिसिटी। कभी हम बहुत सोचते हैं तो अपना सोच ही, अपनी फीलिंग्स ही कॉम्प्लिकेट करते हैं। सिचुएशन सिंपल है, परंतु अपना सोच का कॉम्प्लिकेशन। तो दादी कहा कहती थी कि माइंड को भी सिंपल थिंकिंग और प्रैक्टिकल जीवन में भी सिंपल, बहुत वस्तु, बहुत काम, बहुत संबंध का बोझ नहीं उठाते चलो। बाहर की सिंप्लिसिटी, अंदर की सिंप्लिसिटी। ओम शांति, ओम शांति। These are some thoughts on the Murli of the 27th of December 2021. Today Baba's topic is that only the Creator can share the beginning, middle and end of creation. The song played before today's Murli is Salutations to Shiv. And that song has many accurate praises of Shiva, even though it's a song from Bhakti. But Baba is explaining that for the general Hindu, they don't actually know who incorporeal Shiva is.
as soon as you say Shiva, they will think of Shankar. It wasn't always that Shiva and Shankar were considered to be one, but in the Iron Age that's become the norm. So when someone comes to do the course, the way in which we should explain to them, if they're from a Hindu background, is that Brahma, Vishnu, Shankar live in the subtle region, and then Shiv Baba is separate in the soul world. Shankar is shown as a meditator. So who is he meditating on? And so this is how we explain it. At the start, we don't say there's no Shankar, that Shankar is only a symbol. We don't start like that. We explain it this way. Because these three big gods, Brahma, Vishnu and Shankar, are so central to Hinduism that we just want to establish that incorporeal Shiva is higher than them. And then as they understand the Murli, over time, they'll understand themselves that actually there's no Shankar. Shankar is a symbol of the yogi rather than being a character. So in this way, we understand the creator. Now in Bhakti, when we use these terms creator and creation, of course we are implying that God created all of this and all of us. But Baba explains that this is a predestined drama, an eternal drama. And actually, he didn't create it. The meaning of the creator, the seed of the tree, is that he has the knowledge of the beginning, middle and end of creation, rather than being the one who creates it. So Baba comes and explains to us this knowledge. And he's always very challenging of bhakti. He always says that actually human souls shouldn't be sharing their ideas and philosophies on spirituality because the human souls don't know. Baba gives the example of when you are in the golden and silver age, when you are deities. At that time, you don't do any bhakti. Your intellect is satopradhan, so you know that you should not be going into those things. But then, when we come into the copper age, our intellect has degraded, but still, in a Rajo Pradhan stage, at least we only do bhakti of one incorporeal Shiva. However, as we take rebirth and as time passes, our intellect degrades further and we go into all sorts of different types of bhakti. And you can see how we then really move much more deeper into different philosophies, and actually we're moving further away from the reality. So Baba says that actually it's only the Creator who can share with you your journey through the cycle and the journey of everyone through the cycle. So knowledge is what Shiv Baba gives us. And Baba explains to us that the beginning, the middle and the end is a part that you souls, the all-round actors, have played. Not everyone plays it, everyone has their own role. And it depends on which religion you belong to. The law in the drama is that in the golden and silver age, there is only one religion, which is the deity religion. And that's symbolized as the trunk of the kalpa tree. And the law in this drama is that when there is this deity religion,
there are no other religions, so there are no branches when there's the trunk. Then in the Copper and Iron Ages, there are many different branches of religions. And so there are souls who belong to these different branches, and it's their time to come and play their role in this drama. So they incarnate. Their founder comes, is their religious father, and then they come. And they populate this earth, and they establish their own kingdoms and systems and beliefs. So in the Copper and Iron Age, there's no trunk of the tree, no deity religion, because the two can't coexist. When there's the trunk, there are no branches. When there are branches, there is no trunk. This is the law of the drama. So Baba gives the example of the banyan tree, where the branches really act as the trunk, and so they come out. And so in this world, in the Copper and Iron Age, we are sustained through bhakti, through these different branches. And the world is controlled by these different branches. They establish their kingdoms all over the world. They capture all the resources. And we deities, we are like nowhere really, aren't we? We have no power. We used to be the masters of the whole world. So Baba says, look at the picture of the staircase. And it gives you patience because you know. So by knowing all this knowledge, it gives you that patience and peace, because you understand that now you're in your ordinary Tamapradhan state. But you were once very great. And this is your journey around the cycle. Shri Baba is saying to us today that, sweet children, look how much sorrow you had to lift on the path of bhakti. But that's also part of the drama. You have to do that. You have to become Tamapradhan. So we have to come down the staircase, and others have to have their time to shine. And this is the way the drama is made. Because of this knowledge of the drama, all of our thinking is framed by that. Baba is referring to a phrase that he used to hear his gurus mention quite a lot, which is knowledge, bhakti, and disinterest. In Hindi, knowledge is Gyan, G-Y-A-A-N. Devotion is Bhakti, B-H-U-K-T-I, is a soft T. And disinterest is Vairagya, V-E-Y-R-A-A-G-Y-A, Vairagya. And the way in which gurus will explain it is that it applies to one lifetime. When you're young, you should focus on education. That's Gyan. Then when you marry, you should do bhakti, because that's something which householders do. And then when you retire, you should have disinterest and focus on preparing yourself to leave the body. And some older people, they take complete sannyas of their home and family, and they just focus on bhakti. Baba applies this concept to the unlimited. In the golden and silver ages, we are the embodiments of knowledge. We don't study the Murli at that time, but we live the Murli. And so Baba says, half a cycle there's knowledge. And then in the Copper and Iron Age, we do bhakti. So half a cycle there's bhakti.
And now at confluence age, Shiv Baba gives us knowledge and instills disinterest in us from that bhakti and from the vices. So this is known as disinterest. Daddy Janki used to like this English word, disinterest, rather than the Hindi word vairagya, because that Hindi word vairagya has these connotations of sannyas as being quite extreme. But disinterest just means I'm just not interested. I don't dislike, I just am not interested. And so she liked that term. So in this way, Baba frames our thinking. Those of you who are studying the Murli each day, all of your thinking will now be framed by your knowledge of the cycle, your perception of yourself, of the world, of others. When you watch a news forecast or news program, you're looking at it with that vision of knowledge. You know what's happening. If anything, any karmic account comes in your life, you will think, well, it's the time of settlement, I have to become karmatit, I have to return home. If someone leaves the body, you're thinking, well, every soul has their own role in the drama, it was their time to go and play another role. Everything that you think is framed now by this knowledge of the cycle. So Baba says it's now common for you, it's normal. But in the world, in Bhakti, we just don't even know who the purifier is, and we don't know who makes us impure. And one of the BKs had given Brahma Baba this toy where Ram was on one side, Ravan was on the other side, and Sita's in the middle. And Ravan's pulling her this way, Ram is pulling her that way. And I was saying that they make these toys, but they don't actually know who makes them pure and who makes them impure. But it's actually in Bharat that both of them take birth, both of them incarnate. So Shiv Baba the purifier, he has come in Bharat, and at the start of the Copper Age, we deities also become impure when we're in Bharat. So the vices begin to be used in Bharat, and also now Shiv Baba is making us pure from Bharat. And Bharat is like the roots of all the countries. Like if you imagine all the countries are like a tree as well. So Bharat would be the roots. And this is why Baba, the purifier, comes there. But those people of Bharat, they don't know this. So this is why Baba comes and clarifies it. So Baba explains that in this part of Bhakti, everyone has their own role, everyone has their own staircase. Even the religious fathers like the Buddha, they also have to descend the staircase. And so now is that time of disinterest. And Daddy Janki used to say this word disinterest is linked with simplicity. And in today's blessing, Baba's drawing our attention to that quality. In the Lokik world, we often don't consider simplicity as a good quality. If you say that someone is simple, you're insulting them. But Baba sees it as a very big quality. And what Baba says to us is that children, you have to be simple in your living, in your external world, because we all have that experience that if you have too many things or too many duties or too many businesses,
actually becomes a burden. And then you also have to develop simplicity in your thinking. Lady Janki used to give lots of classes on how her observation is that we all think too much. And actually it's our own thoughts that often complicate everything. Everything is fine, but our own thoughts complicate things. Our own feelings. So becoming simple internally is also a really great blessing to give ourselves. Om Shanti.